Hi guys, welcome back to my channel, and today we'll be studying transpiration. So transpiration is a very commonly heard word that we've already studied in our previous classes, and from 10th and 12th and from the basics of science we must have heard this word because it is a basic mechanism that takes place in the plants. So today we'll be studying what transpiration really is and a bit of a detail of how is transpiration helping the plants, or how is it a disadvantage to them. All right, so transpiration is a process in which all the water or large amount of water is lost from the aerial parts of the plants, that is especially the leaves, that is the upper parts of the plants जिसमें leaves present होते हैं वहाँ से transpiration होता है, and it occurs in the form of water vapor. ओके, द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है, मतलब कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है ट्रांसपिरेशन की किस वजह से होता है और कौन ट्रांसपिरेशन करवा पाता है, इज़ द वाटर वेपर प्रेशर बिटवीन द लीफ एयर स्पेसिस एंड द एक्सटर्नल एयर. द एक्सटर्नल एयर जो बाहर की एयर है, और जो हमारा लीफ है अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें एयर स्पेसेस होते हैं लीव्स के बीच में, तो उसके बीच में जो हमारा वाटर वेपर प्रेशर होता है दैट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपिरेशन. So now higher vapor pressure difference between the leaf air space and the external air increases the transpiration. और अगर vapor pressure जो है उसका amount is much higher, ठीक है, between the leaf air space and the external air, then transpiration increases. मतलब पानी का लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा when there is a high amount of vapor pressure difference between the leaf's airspace and the external air. And if you want me to explain in a bit detail, then you can just look here. This is the diagram. This is the air spaces in between the leaves, and this is a cross section of लीफ, एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल एयर. अब इसके और इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वेपर प्रेशर का, अगर वो ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, अगर वो कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगी. ऑलराइट, ट्रांसपिरेशन में अकर थ्रू स्टोमेटा, cuticle and lenticels of the plants, and these three will be explained in detail later on. Just keep listening. And therefore it can be termed as, so accordingly they are termed as stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration. Now next is cuticular transpiration. What is cuticular transpiration? पहले बताओ cuticle क्या होता है. Cuticle is a layer of waxy covering on the epidermis of the leaves or stems. स्टेम्स एंड लीव्स में जो एपिडर्मस होता है उसके बाहर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. वो वैक्सी लाइक कवरिंग होती है, वैक्स लाइक उसका कंसिस्टेंसी होती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रेफर्ड एज क्यूटिकल, एंड क्यूटिकल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वैक्स एंड क्यूटिन. ऑब्वियसली क्योंकि वैक्सी थोड़ा सा सब्सटेंस होगा उसमें, तभी वो थोड़ा सा wax like appearance होती है उसकी. cutin. What is cutin? It is a principal constituent of the cuticle. It is a polymer that consists of long chain hydroxy and epoxy fatty acids that are attached to each other by ester linkages. Alright, wax तो हमें पता है क्या होती है. अब cutin का उसने बोला है कि जो cutin होता है, it is a principal constituent of cuticle. That is, it is a polymer that consists of, एक polymer होता है जिसके पास long chain hydroxy और epoxy fatty acids होते हैं जो एक दूसरे से attached होते हैं by ester linkages. Okay, so the loss of water through cuticle in the form of water vapor is known as cuticular transpiration. And total जितनी भी transpiration हो रही होती है उसमें से जो cuticular transpiration होती है वो about 5 to 10% account करती है. So the next we will be studying about लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन? लेंटिसेल्स से जो होती है उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. लेंटिसेल्स इज़ द ओपनिंग इन द बार्क ऑफ स्टेम एंड रूट्स that allows the gases to be exchanged between the atmosphere and the inner living cells of the plant. मतलब लेंटिसेल का जो डेफिनेशन है दैट इज़ एक ओपनिंग होती है बार्क ऑफ स्टेम्स में और रूट्स में, ठीक है, जो अलाउ करती है गैस को एक्सचेंज होने में बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इनर लिविंग प्लांट सेल्स. ठीक है, जितने भी प्लांट्स के सेल्स होते हैं उनको एक्सचेंज करनी होती है गैस बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो लेंटिसेल्स से करते हैं, वो ओपनिंग्स होती हैं लेंटिसेल्स. ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द वाटर वेपर थ्रू लेंटिसेल्स इज कॉल्ड एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एंड वो अकाउंट करती है 1 to 5%, जबकि जो हमारी क्यूटिकुलर वी विल स्टार्टिंग क्यूटिकुलर वाज अकाउंटिंग फॉर अबाउट 5 to 10%, दैट इट इज़ twice the times of lenticular transpiration. So next is stomatal transpiration. Specialized epidermal cells
that is responsible for modulating the exchange of gases between the plant and the environment is called as stomatal transpiration. अब stomatal transpiration is the main transpiration that we need to study, stomata के through जो होता है, ठीक है. अब इसमें बोला है these structures act through turgor pressure. इनमें जो होता है हमारा जो stomatal transpiration होती है वो होती है through turgor pressure. First function is to allow the gaseous exchange between the plant's internal tissue and the atmosphere. Thus, the loss of water vapor through the stomata is called as stomatal transpiration. And majority transpiration जो होती है वो stomata के through होती है, इसलिए हमने इस बोला कि it is accounting for 90% of the transpiration that is taking place. So, what is stoma? It consists of small pore surrounded by a pair of kidney-shaped or dumbbell-shaped guard cells and 2 to 4 subsidiary cells. ठीक है. स्टोमा की डेफिनेशन बताइए. अभी स्टोमाटा अलग है. स्टोमा हमने बोला एक स्मॉल पोर होता है. हमने स्टोमाटा को ही बोला कि जो एक स्मॉल पोर होता है उसके साइड पे गार्ड सेल्स होते हैं. ठीक है. गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप और डम्बल शेप के, और 2-4 सब्सिडरी सेल्स होते हैं साइड पे. हर स्टोमा के पास यही स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें. ठीक है. अब डाइकॉट्स एंड नॉन ग्रास मोनोकॉट्स में क्या होता है, किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं. इन ग्रासेस डम्बल शेप गार्ड सेल्स होते हैं. अब एक बार एग्जांपल के थ्रू देख लो. यहाँ पे ये रहा स्टोमा, दिस इज़ द स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर. ये है किडनी शेप गार्ड सेल्स, और यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स आएंगे. दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस स्ट्रक्चर. So now let's move on. The guard cells, subsidiary cells and the pore are collectively called as the stomatal complex. मतलब कि this whole area, ये अभी हमने बोला this is the stoma, that is the pore part, this is the guard cell and this is the subsidiary cells जो इसके आसपास होते हैं. तो this whole complex is called as the stomatal complex. cells को मिला के subsidiary cells को. Alright, now next is structure in the guard cells are thick and inner walls. ठीक है. outer walls thin होती हैं, inner walls thick होती हैं. radial micellation, that is the cellulose microfiber radiate around the circumference of the pore, and bare chloroplasts, only epidermal cells with chloroplasts and connected end to end. ये basic structure होता है. उसके बाद आता है guard cells are crucially important functional elements. They regulate stomatal apertures, thereby controlling the rates of CO2 uptake and water loss and hence influencing the photosynthesis. अब guard cells का function क्या होता है? ये जो guard cells हैं sides पे kidney shape के, ये इनका क्रूशल फंक्शन होता है कि रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल अपर्चर को. स्टोमेटल अपर्चर को रेगुलेट करना मतलब द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को सारा जो कंट्रोलिंग होती है वो ये करते हैं. ठीक है. और ये कंट्रोल करते हैं CO2 अपटेक, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, वाटर लॉस, एंड देयरफॉर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेनिंग द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट. कितना CO2 जा रहा है, कितना वाटर लॉस हो रहा है, सब ये गार्ड सेल्स को. Guard cells means he is guarding the stomata basically. तो स्टोमाटा के जितने भी फंक्शंस होंगे वो इसी से ही रेगुलेट होंगे. जो ओपनिंग, स्टोमाटा कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, कितना पानी लॉस हो रहा है, CO2 अपटेक हो रहा है, नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बाय द गार्ड सेल्स. ऑलराइट, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी शोन यू. दिस इज़ द क्यूटिकल, जो वैक्सी कवरिंग हमने बात करी थी अपर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के लिए. मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ये इन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन इट इज़ प्रेजेंट. मीजोफिल सेल्स, दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस. स्टोमा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. गार्ड सेल्स बहुत सारी शेप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स, ग्रासेस एक्सेट्रा. दिस इज़ द एयर स्पेस जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन होती है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, vascular bundle and the air space again. So now let's come to the mechanism of action of guard cells. अब ये हमने दिखाया है open stomata, this is the closed stomata. ठीक है. Just analyze the basic difference. This is open and stomatal pore is open here. The guard cells are these are the subsidiary cells I was talking about, and they together, this is the stoma basically. तो वो पूरा ये stomatal pore हो जाता है. And this is again the same thing but in a closed form, closed stomata. So now mechanism of action of the guard cells. The cause of opening and the closing of stomata is the change in the turgidity of the guard cells. That is, stomata open because stomata क्यों खुलता है? क्योंकि osmotic entry of the water होता है, because of the पानी को अंदर जाना होता है.
into the guard cells. The entry of water increases the turgidity of the guard cells. मतलब guard cells खुलते हैं, स्टोमेटा खुलता है क्योंकि पानी को अंदर जाना होता है. अब पानी जैसे ही इसके अंदर जाता है, when water goes inside the guard cells, the entry of water increases the turgidity of the guard cells. Therefore, when turgidity increases in the two guard cells, the thin outer walls bulge out and force the inner walls to form a crescent shape. इनका crescent shape है क्योंकि पानी को अंदर जाना है. पानी अंदर जाएगा तो turgidity बढ़ेगी guard cells की. Turgidity बढ़ेगी तो outer cell walls will bulge out and force the inner walls into a crescent shape. Alright, now turgidity causes them to elongate because the radial orientation of the cellulose microfibrils prevent increase in girth. Since guard cells are attached to the ends and the inner walls are thicker, the guard cells expand more. अब guard cells में हमने क्या बोला था कि जो वो attached होते हैं हमेशा ends पे. Therefore, the inner walls are thicker and the guard cells expand more. Therefore, the expansion pulls the guard cells and causes the stomata to open. ठीक है, वो स्टोमेटा को खोलने में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स. पानी अंदर आता है, टर्जिडिटी बढ़ती है, टर्जिडिटी बढ़ेगी तो आउटर वॉल्स विल बल्ज आउट एंड फोर्स द इनर वॉल्स टू अ क्रीसेंट शेप. तो क्रीसेंट शेप की इनर वॉल्स जो होती हैं वो थिकर. सो व्हेन द गार्ड सेल्स लूज द टर्गो प्रेशर ड्यू टू द वाटर लॉस, द इलास्टिक इनर वॉल्स रीगेन द ओरिजिनल शेप. अब पहले हो रहा था कि गार्ड सेल्स में पानी आ रहा था तो वो क्रीसेंट शेप बना रहा था, ठीक है, टर्गो प्रेशर बन रहा था. बट अब क्या हो रहा है, गार्ड सेल्स लूज द टर्गो प्रेशर ड्यू टू द water loss and therefore the elastic inner walls regain their original shape. The guard cells then become flaccid and the stoma closes. तो वो बंद हो जाता है. ठीक है, दोनों mechanisms have explained. Since water is the driving force of the guard cells action, this means that there must be a gradient in the water potential between the guard cells and surrounding the subsidiary cells. ठीक है, अगर वाटर ही एक्ट करा ड्राइविंग फोर्स के जैसे इन बिटवीन द गार्ड सेल्स, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी अ ग्रेडियंट इन द वाटर पोटेंशियल इन बिटवीन द गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सेल्स. देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब क्या है, हमने in the form of arrow marks we have just elaborated the sequence of events in the presence of lights. Increase in the solute concentration in the guard cells, decrease the water potential, endosmosis of water, increased turgidity which leads to opening of stomata. So if you guys have heard the whole thing, whatever I've told you, then you might have understood what this basically is. So just analyze it again, just go through it again, go to the diagrams, and basically transpiration is the easiest process that is explainable right now. And do not skip this topic. Every topic is important for the net point of view. And don't forget to like, share and subscribe this video. Share it among your friends, whosoever is preparing for CSIR net. Share it with them. And if you guys have any thing that is missing here, anything you want me to tell here, just tell me in the comment section below. And don't forget to subscribe the channel so that you can get each and every update as soon as possible, as soon as I upload the video. Alright guys, see you, bye.